हेलो फ्रेंड्स, वेलकम समस्त को स्वागत। Hope you all are doing great. Welcome to this fantastic session in exploring goals up. नहीं, YouTube channel अच्छा जहाँ भी हो. So this is a demo session and application रे जो माने join करी जाइछो बहुत बढ़िया करिछो जो माने करिनो जेते जल्दी पारुछो करी जाओ काहे कि ना क्लासेस जो गुडा जाउची लाइव जो लाइव क्लासेस गुडा से गुडा रेकॉर्डेड देखिले सेतेटा मजा न लागि पारे तो समस्त को रिक्वेस्ट करिबे समस्त जेते जल्दी पारुछो जॉइन करी जाओ एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लीकेशन दिस इज द लोगो एंड यू कैन जॉइन इन आवर application easy and for more details you can give a WhatsApp message 8917214900 is the WhatsApp number and या सहित तुम माने एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लीकेशन को सीधा सड़क गूगल प्ले स्टोर रे मध्यम पाई परिबो एक्सप्लोरिंग गोल्स सर्च करिकि किंबा वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अवेलेबल अछि तमे आपको जॉइन करी परिबो with just 399 rupees and you will get all the facilities like live classes जदि लाइव मिस करछ रेकॉर्डेड हिसाब रे जते बेले चाहिबो देखि परिबो मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल सब जिंस अवेलेबल रहउछि ओके आज रो सेशन जोटा रहिछि दैट विल बी वेरी इंपोर्टेंट जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु भी बहुत इंपोर्टेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जदि मु तमरो सिलेबस को जाई कि देखिबी ताले तुम माने जानिचो बहुत भलो भाबरे काहे कि ना मु कहि सारिछि ऑलरेडी जे फर्स्ट तमे सिलेबस को थरोली देखिनियो तमे जदि देखिबो दिस इज ए कॉमन पार्ट फॉर ऑल जोटा मेन एग्जामिनेशन पाई दरकार अछि प्रीलिम्स पाई मध्यम प्रिपरेशन चलिछि यू विल गेट एवरीथिंग इन द एप्लीकेशन बट एठी देखो असेसिंग द लर्नर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड लर्निंग हाउ टेस्ट कंस्ट्रक्शन ये तीनटा सब पार्ट रे ताको डिवाइड करा जाय छै एंड सब पार्ट रे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव तापर कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक कोन असेसमेंट रही छै असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग project assignment observation test self assignment peer assignment teacher made test and standardized non standardized test हमारे standardized and teacher made test preparation for test construction ये सब जिंस self assessment and peer assessment direct observation and participative and non participative observation ये सब जिंस माध्यम रे हमें असेस करछे इवैल्यूएट करछे छुआरो परफॉर्मेंस को छुआरो डेवलपमेंट को एंड ताहा हमको फीडबैक मध्य दउची हाउ टू डेवलप how to make the child more efficient and proficient ए सब जिंस रहउची सिलेबस रे in view of the syllabus and what is required for your examination point of view I have analyzed everything I have gone through this today we will complete the assessment and evaluation part in this session and my dear friends it will also help you for OSSTT examination B.Ed entrance examination even Odisha education service सबु कैटेगरी रो एग्जामिनेशन जोटी पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड हिसाब रे छद्म नाम रे रहू कौनसी भी नाम रे रहू ये एप्टीट्यूड ये टीचर बनिबा पई जो एप्टीट्यूड दरकार एथि पई निहाती दरकार या सहित आज हम जहां थ्योरी कांसेप्ट डिस्कस करिवा ता सहित एसोसिएटेड 50 रु अधिका MCQs madhya kariba so this will be a very important session for all of you do not skip as any part of this video watch it thoroughly and prepare a note be banaone ebe kebol enjoy karo you can prepare this watching the recorded class and exploring goals aap re jo mane join karina you can join as soon as possible to get all the important classes that will help you to crack your target this time in your first attempt maybe fifth attempt doesn't matter you will get success I will ensure that केवल तमरो डेडिकेशन दरकार इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट रो आज रो सेशन रहिछि समस्तन पई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो आज रो डिस्कशन सो डू शेयर विथ एवरीवन टिके दया करी समस्त ए वीडियो को जते पारुचो शेयर करि दियो एंड ता सहित वीडियो को लाइक करि दियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इंपोर्टेंट सेशन माय डियर फ्रेंड्स वेलकम जो माने नुआ अच्छा सब्सक्राइब करबा को भूली जाइछो चैनल को सब्सक्राइब कर दे यू विल गेट मास्टरपीसेस इन दिस YouTube चैनल दिस इज नॉट जस्ट a channel a family of को माने अछंती एठी फैमिली रे गदिया दल अछंती सेति की कहले सफिशिएंट बोली मु भाबुची बट स्टिल जदि मु डिटेल रे कहबी देयर आर सक्सेसफुल पीपल देयर आर सक्सेसफुल टीचर्स देयर आर एस्पिरेंट्स देयर आर स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट्स राइट बहुत प्रकार रो अछंती सो लेट अस बिगिन दिस इंपोर्टेंट सेशन
प्रतिटी लाइन प्रतिटी वर्ड को इंपोर्टेंस दबो बोली मु आशा करी मजा लगुनि बोली भाबी कि गोटे पळेबनी पळेबो जदि एमतिया सेशन गोटे मिलिबनी कोठी भी मिलिबनी तुम किसी भी पाइजो किसी भी नोट्स पाइजो विभिन्न प्रकार डिस्कशंस पाइजो बट दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू प्लीज बी श्योर इवैल्यूएशन सिस्टम हेल्प्स इन असेसिंग एबे होल टीचिंग मेथड को असेस करिवारे जो सिस्टम काम करे से होची इवैल्यूएशन right best practices can be scaled off or continued and the backlogs can be removed and addressed तो evaluation माध्यम रे सब जिंस होई पारे assessment evaluation भितर फरक भी मु कहबी जेमते साई कहउचंती ऑलरेडी assessment is always product oriented हाँ नहीं process oriented and evaluation is always product oriented assessment तुमको प्रोसेस टा केमती हेले बेटर हे परिबो आ कोन चेंजेस आनिबा दरकार फीडबैक दबो कोटा असेसमेंट इवैल्यूएशन कोन करिवो हमको एंड प्रोडक्ट बा लर्निंग आउटकम दवारे हेल्प करिवो इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड इट इज in the process of teaching learning assessment evaluation is not a different part from teaching learning it is an integral part of the process of teaching learning evaluation is one of the important part of teaching learning process it facilitates teachers and students to enhance and upgrade the quality of teaching learning process या द्वारा अपग्रेड करे टीचर निजर क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग को छुआ को मध्य कोन मिले अच्छा असेसमेंट और इवैल्यूएशन फरक करी करी पडुथवा सब बेले हला असेसमेंट प्रोसेस इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ता माने न जे इवैल्यूएशन सब बेले प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन रो आउटकम ने कि असेसमेंट रे भी यूज करा जाई पारे सो दीज आर इंटरवोवन प्रोसेसेस इवैल्यूएशन असेसमेंट ऊपर डिपेंड करे असेसमेंट इवैल्यूएशन ऊपर भी डिपेंड करे राइट असेसमेंट इज क्वांटिटेटिव ना क्वालिटेटिव यस वेरी गुड असेसमेंट होची क्वालिटी कथा कहे असेसमेंट का कथा कहे क्वालिटी कथा कहे किंतु इवैल्यूएशन कोन कहे तीटा जाको क्वालिटी कथा भी कहे प्लस क्वांटिटी कथा भी कहे केते रहिला आ केते भलो हला दीटा जाको कहे एनीवे हमें जिबा डायग्नोस्टिक रिमेडी और प्रोग्नोसिस हला फ्यूचर प्रेडिक्शन तुलसी दुई पत्र रु बासिला परि ता भितरे तार चमत्कारी गुण गुड़िक देखा दउची ना सी स्कूल रु बाड़ डेई की फेरार अछि बिछुआती ये होची प्रोग्नोसिस टेस्ट हमें तार फ्यूचर को प्रेडिक्ट करि परिबा ए टेस्ट माध्यम रे डायग्नोसिस एंड रिमेडी आर कनेक्टेड विथ वन अनदर डायग्नोसिस होची फाइंडिंग द प्रॉब्लम रिमेडी होची गिविंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक टेस्ट होची असेसमेंट एज लर्निंग बी श्योर एठी कोन होची असेसमेंट एज लर्निंग रे आमे पिलारो स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी को फाइंड करूचे बुझी पारलो स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी को फाइंड करूचे बा तारो प्रॉब्लम को फाइंड करूचे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन द्वारा एंड रिमेडी दउचे कोन से जो तारो स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी अछि ताकू फाइंड आउट कला परे रिमेडी माध्यम रे ताकू मेडिसिन ता दउचे बा सॉल्यूशन ता दउचे जे केमिति सही स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी रो ओवरकम करिके आसीबो हाउ टू ओवरकम दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सो फाइंडिंग द प्रॉब्लम इज थ्रू डायग्नोसिस and through remedy we are giving solution to the problem that is why it is called therapeutical in nature kono therapeutical अरे थेराप्यूटिकल कहीं कि ना गोटे डॉक्टर जते बेले रोग को आइडेंटिफाई करे ताकू थेरापी दिए मेडिसिन हिसाब रे हे पारे किंबा अन्य कोनोसी एक्सरसाइज हिसाब रे हे पारे राइट सो से सॉल्यूशन टा होची थेराप्यूटिकल बा रिमेडियल क्लासेस जो निया जाए वीक स्टूडेंट्स मानन को पाई बस जारो एरिया ऑफ डिफिकल्टी अछि किछि हमें एनालिसिस करछे से अनुसार ताकू रिमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा क्लास दिया जाए इवैल्यूएशन रो ऑब्जेक्टिव कोन गोटे छुआरो वीकनेस टाकू डायग्नोज करिवा फ्यूचर अचीवमेंट को प्रेडिक्ट करिवा जोटा हमें कहले प्रोग्नोसिस ठीक अछि तापरे टेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स
स्टूडेंट भितर केते स्किल और एप्टीट्यूड केते डेवलप कला सेटा भी जानिबा इवैल्यूएशन familiarize the teacher with nature of pupil learning development and progress छुआ learning development केते कोच ओके सेटा को जानिबा ता सहित मिसिक एंड स्कूल कम्युनिटी भितर गोटे रिलेशनशिप को इंप्रूव करिवा इवैल्यूएशन रे तमरो प्रोग्रेस कार्ड ता दिया जाए तो बापा मांगू पेरेंट्स मीटिंग हुए ना नहीं पेरेंट टीचिंग रे चर्चा हुए को पिला केमती पडुची yes so that is through evaluation we are developing improving the school community relationship helps parents to understand learners growth interest and potentials एबे इवैल्यूएशन रे केवल मार्क्स देई देले बा ग्रेड्स देई देले मार्क्स ग्रेड्स ता काहे की दबा दरकार पड़े काहे की ताहा वर्तमान पेरेंट्स माने देखिबे आ जानिबे जे छुआ को जाय ग्रोथ करछि डेवलप करछि इंटरेस्ट तार को एरिया रे एंड पोटेंशियल्स कोन अछि ता भितरे को सब्जेक्ट रे बेस्ट करछि को सब्जेक्ट रे वर्स्ट करछि कोटा तार स्ट्रेंथ कोटा तार वीकनेस ता भितरे इंटरेस्ट को एरिया रे अछि तार पोटेंशियल्स कोन एटा टीचर आमर इवैल्यूएशन द्वारा पेरेंट्स मान को पाखरे पहुंची पारला इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स इवैल्यूएशन बहुत गुडे प्रकार रो अछि त माने जानिछो जोथुर को क्वेश्चन डायरेक्टली आसे एंड बहुत इंपोर्टेंट आसे इंपोर्टेंटली आसे असेसमेंट इवैल्यूएशन इज द वाइटल part of your syllabus from which part the maximum number of questions will come in the main examination okay it determines the knowledge and skills the students possesses placement evaluation which are necessary at the beginning of instruction in a given subject area beginning of instruction in a given subject area placement evaluation कोनोसी चाकरी भितरे दाखल करिवा पूर्वरु चेक करा जाय कोनोसी कोर्स रे एंट्री करिवा कोर्स रे एडमिशन करिवा पूर्वरु एटा चेक करा जाय कोर्स एडमिशन पूर्व एंट्रांस टेस्ट हे पारे यारो एग्जांपल कैंपस सिलेक्शन है पारे फॉर जॉब पाई कौन से जॉब रे एंट्री करछे बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन रे कौन कौन स्किल दरकार और नॉलेज दरकार ताहा टेस्ट करछे एई नॉलेज और स्किल जदी अछि एई चाकरी पाई सीए उपयुक्त बा एई कोर्स रे एडमिशन करबा पाई सीए उपयुक्त एई एंट्री बिहेवियर को स्टडी करछि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इज diagnosis is remedial teaching diagnosis is finding out the area of difficulty remedial teaching is giving solution to it therapeutical this evaluation can be done in between the course to students गोटे कोर्स सरीबा पूर्वरु करि परिबा बा दुईटा कोर्स मझिरो गैप रे करि परिबा ओके very important basic understanding to know the basic understanding level of students regarding the concept before the concept is being taught कंसेप्ट पढ़ा जीवा पूर्व प्रकृत रे तार अंडरस्टैंडिंग तार कंसेप्ट तार प्रायर नॉलेज प्रीवियस लर्निंग प्रीवियस एक्सपीरियंस स्किल्स एंड नॉलेज कोन अछि ताको चेक करा जाय इट हेल्प्स टू नो द कॉजेस व्हिच लीड टू प्रॉब्लम्स कॉज कोन काहे की प्रॉब्लम अछि ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस से प्रॉब्लम रो कॉज बा जड़ को जानिबा होछि डायग्नोसिस to find out the problem to find the cause of problem it also equips the teachers to bring out possible remedies so एठी remedies आसिला remedial teaching आसिला therapeutical in nature काहे के problem तमे find out करछो diagnosis द्वारा तार solution remedial classes द्वारा दिया जाए remedial teaching द्वारा दिया जाए which is therapeutical in nature जो माने अच्छो समस्त को धन्यवाद from morning मु गोटे क्लास एप्लिकेशन रे करि सारिछि तापरे गोटे कोई भी तम मन को पाई सिलेक्ट हेथिवा कैंडिडेट का सहित इंटरेक्शन करिथिली जार वीडियो ए क्लास परे तम माने पाई जिवो and वर्तमान this is the third interaction with you my dear friends and this is very important and very vital hope you will understand the importance of this topic. The aim of diagnostic evaluation is to find out the causes of learning problems, plan to take remedial action.
कहला कॉजेस, फाइंड द कॉजेस ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स। कॉज कथा मु कहूची रिमेडी कॉज डायग्नोसिस बुझी गलो आउ तापर रिमेडियल एक्शन बा रिमेडीज बा रिमेडियल टीचिंग ये होची तारो सॉल्यूशन व्हिच इज थेराप्यूटिकल इन नेचर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत भल से जानि छु। मिचेल स्क्रीवेन कॉइन करथिले टर्म टा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो 1967 रे। Formative evaluation can be defined as a classroom interaction between teacher and students in order to know the student learning status. Student केते पढुछि फॉर्मेटिव मु कोन कहिछि तीनटा एफ कहिछि या पे फॉर्मेटिव पई कोन कहिछि तीनटा एफ तुमको कहिछि कोन कोन गोटेला एफ फॉर फॉर्मेटिव गोटेला एफ फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली कुआ जाय को फॉर्मेटिव टा एंड एठु मिले कौन फीडबैक कहा को फीडबैक मिले बोथ टीचर एंड स्टूडेंट को फीडबैक मिले गट इज इट क्लियर टू यू ऑल बीएड पाई टॉपिक दरकार ना नहीं यू शुड नो दैट यू शुड फील दैट केते दरकार न दरकार परीक्षा रे बसिले तापर नले फील करिवो जदी एबे फील न करूचा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट फॉर लर्निंग we will get feedback. Who will get feedback? The teacher as well as student. What kind of feedback? How to improve? What are the difficulties? What are the problems? How to solve? What is the cause of failure? How to make it, convert it into success? ये सबू जिनसर feedback मिले. Okay. It can be carried out at any stage of the learning process. Assessment for learning. बा फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जे कोनोसी टाइम रे करा जाई परिबो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 1968 रे बेंजामिन ब्लूम पॉपुलराइज्ड द टर्म थ्रू हिज बुक लर्निंग फॉर मास्टरी। इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस रा इंप्रूवमेंट पई यूज करा जाय काहे कि तुमको मिलिला फीडबैक ना तो फीडबैक जेहेतु मिलिला से तो निश्चित रूपे इंप्रूव करिवो ना ठीक अछि। एबे फॉर्मेटिव चलछि 40% समेटिव 60% फॉर्मेटिव चारिटा पार्ट रे स्कूल रे मध्ये देखुछो 10th रो पिलांकर जेतोले टेस्ट होछि फॉर्मेटिव प्रति वर्ष दुईटी फॉर्मेटिव एवं गोटिए समेटिव रो प्रति 6 मंथ्स रे दुईटी फॉर्मेटिव और गोटिए समेटिव सेमति टोटल 10th रो गोटे ईयर भीतर दुईटा समेटिव एवं चारिटा फॉर्मेटिव टेस्ट रोछ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रह ये लर्निंग प्रोसेस रो गोटे इंटीग्रल पार्ट एटा सेपरेट नो राइट एटा सेपरेट नो इट इज ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओके तापरे इट occurs frequently during the course of instruction एटा हुए फॉर्मेटिव का एबे जेमति देखो एबे क्लास रे मु कहली एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन वी विल हैव 50 प्लस एमसीक्यूज सो दैट विल बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहि परिबो राइट काहे कि तमे सेइतरु जानि परलो जे तमे केते बुझिचो न बुझिचो आ तम पाखरे अपॉर्चुनिटी अछि कि तमे आउ थरे वीडियो को देखि परिबो आउ थरे नोट करि परिबो एवं तापर जेते बेले क्वेश्चन करिवो 50 रु 50 भी रखि परिबो गॉट इट वेरी सिंपल क्लियर ओके सो its result are made immediately known to the learner संगे संग रिजल्ट लर्नर जानि जाय जेमते एबे 50 टा एमसीक्यू यूज करबा तो 50 टा जकर आंसर कोन होबो यू विल नो इट immediately so you can know your level of understanding your level of development and accordingly you will plan it will give you immediate feedback it may sometimes take teachers observation only it reinforces learning of the students reinforce काहे करिवो बहुत बढ़िया निया लगै दलो वेरी गुड वेल डन जो मु कहिबी जते बेले आंसर तमे ठीक देई दबो आ जते बेले कहि गधिया दलो तुमको लाज नाही रे कोन पढेला बेले कोन देखुतलो कुआडे अनैथिलो के जानि एते बेले सब भूल करछो ये भी गोटे फीडबैक दबो सो ये जो reinforcement will work to improve yourself your knowledge ये होची फीडबैक समेटिव इवैल्यूएशन परीक्षा शेष या पर आउ किछि करिवार नाही तापर तुम पचारिबो सर नेक्स्ट वैकेंसी केबे आसीबो सेटा हला समेटिव इवैल्यूएशन तापर और रास्ता नाही जतबे
So don't make joke of yourself. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର. It is the type of evaluation which takes place after students have completed units of works or modules at the end of each term or year, semester हो कि annual हो. Semester examination and annual examination are the examples of summative evaluation. जा पर ଆଉ चांस नाही निजको बदलियो. Okay. So the information it gives indicates progress and achievement usually in grades related to numerical terms. सबले grades रे वर्तमान दिया जाउची marks रे नाही grades रे दबा अगर marks रे दिया जाउथिला percentage रे दिया जाउथिला जहां भी numerical terms रे हमें एतिकी सीए अचीव कला बोली देई देले that is the result of summative evaluation cannot be changed. You will not get a chance to change it again. Summative learning outcome or end product of the whole teaching learning process at the end of the year, at the completion of the course, at the end of the semester, and completion. ए दीटा वर्ड अछि त समेटिव को इंडिकेट करछि जानि जाओ एंड कंप्लीशन. आउ सर्टिफिकेट दोछि गोटे ग्रेड्स दोछि मार्क्स दोछि न्यूमेरिकल वैल्यू दोछि. इट इज आल्सो कॉइन्ड बाय मिचेल स्क्रेवन जोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन मध्ये करथिला एंड समेटिव भी करछंती. मिचेल स्क्रीवन 1967 रे एठी हम देखुतले मिचेल स्क्रीवन करोना या पूर्वरु मध्ये मिचेल स्क्रीवन coined the term formative evaluation as well and summative also. Okay, summative रो कैरेक्टर कोन? It is terminal in nature. end रे हुए तो terminal हबो. As it comes at the end of the course of instruction. Instruction course रो end रे हुए terminal. नहीं मु कहली semester annual. It is judgmental in character काहे कि numerical value दिया जिवो. न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जिवो मार्क्स दिया जिवो कोन मार्क्स किंबा ग्रेड्स. सो सेंस दैट इट जजेस द अचीवमेंट ऑफ पुपिल्स छुआंकर अचीवमेंट रो लेवल कोन अछि ताकु जज करे. इट व्यूज इवैल्यूएशन एज ए प्रोडक्ट because its chief concern is to point out the levels of attainment. केते अचीव कला तो एटा जजमेंट बोली कहउछ हम इवैल्यूएशन ता प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोली कहउछ सेति पाए. इट कैन नॉट बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली केवल टीचर ऑब्जर्वेशन हिसाब रे हुएनी. कीवर्ड्स आर यस एट द एंड ऑफ द कोर्स, at the end of term, at the end of year, at the completion of a course. एमती जदि अछि इंडिकेट करछि समेटिव इवैल्यूएशन को बुझि दिबो. CCE is an integral part of your syllabus for teaching exams and for different competitive exams like B.Ed and OES and NET. ये सब बुद्धि पाई मध्य यूजफुल. So continuous and comprehensive evaluation. दीटा वर्ड और तापर इवैल्यूएशन. फर्स्ट वर्ड कहला कंटिन्यूअस माने रेगुलर बेसिस रे. सेकंड कहला कंप्रिहेंशन माने इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड. और इवैल्यूएशन होची लर्निंग प्रोग्रेस को जानिबा. ओके देखिबा तीनटा जाक टर्म को कहा जाय छि कंटीन्यूअस कहला रेगुलर एंड कंटीन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट. ये होची कंटीन्यूअस. ऑल राउंड डेवलपमेंट होची ना नाही सेटा को चेक करूची इन ए रेगुलर बेसिस. इट इज कंटीन्यूअस. कंप्रिहेंसिव कहला मेंटल इमोशनल फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. मेंटल इमोशनल फिजिकल सब प्रकार डेवलपमेंट छुआर होची ना नाही ताकू बुझिबा जानिबा होची कंप्रिहेंसिव. तापर इवैल्यूएशन वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स अछि इवैल्यूएशन पई जहा को यूज करी के हमें असेस करूचे इवैल्यूएट करूचे स्टूडेंट रो प्रोग्रेस को लर्निंग आउटकम को. खराब लागुचे कि लागुचे हां कौन करे जति जानि सेमती पढौ जे मु याडू भलो पढै जाननी बोली भाबो. कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअसली हम इवैल्यूएट करछे का कुछ छुआर लर्निंग आउटकम को तार केमती डेवलपमेंट होची तार ऑल राउंड डेवलपमेंट होची ना नाही तार कंटीन्यूअसली हम इवैल्यूएट करछे बा कंप्रिहेंसिव वे माने मेंटल स्पिरिचुअल इमोशनल फिजिकल सब एस्पेक्ट्स रे तको हमें देखछे.
ओके तापरे टेस्ट जो दी प्रकार रो एग्जाम रे तो आसुचे गुडा गोटे आसुचे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ गोटे आसुचे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्राइटेरियन रेफरेंस हला परसेंटेज सिस्टम परसेंटेज क्राइटेरियन माने कोन आगरु फिक्स करा जाई छि गोटे स्टैंडर्ड फिक्स्ड स्टैंडर्ड हिसाब रे फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड को सेट कर दिया जाई छि जे गोटे छुआ जदि 60% रखुची ताहले सिए गुड बोली हमें कहले बा क्वालिफाइड बोली हमें कहले लेस देन 60% हेले नॉट क्वालिफाइड बोली कहले एग्जांपल तुम माने जानिचो सीटीटी ओटीटी ओएसएसटीटी दोउचो त reference test the preference of other students doesn't affect the student's score नहीं कि काहरी सहित काहरी कंपटीशन नहीं एठी एटा बुझी जाओ एटा कहिछि कंपटीशन कथा इन क्राइटेरियन the performance of other student does not affect a student score आउ जने 90% रखिले से तुम सीट नहीं जो सेमती नो बुझलो ना किंतु सीट नहीं जवाटा नॉर्म रेफरेंस ता एटी कंपेयर स्टूडेंट्स नॉलेज और स्किल टू द नॉलेज और स्किल ऑफ अदर नॉर्म ग्रुप अन्य पिलांक सहित कंपेयर करे ये होउचे तमरो सीबीटी ये होउचे जो एलटीआर रो एग्जाम दबो सेटा ये होउचे जो बीएड रो टेस्ट दबो सेटा ये जो ओईएस रो टेस्ट दबो सेटा ये होउची कोन ये होउची नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मेजर इन परसेंटाइल सिस्टम रे इट कैन बी मेजर्ड इन परसेंटाइल सिस्टम एग्जांपल देछि कैट एआईपीएमटी बीएड एंट्रांस ए सबु होउची यारो एग्जांपल बुझगलो ना क्राइटेरियन रे फिक्स क्राइटेरिया रहिछि फिक्स्ड प्री-डिटरमाइंड क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड होची क्राइटेरियन रेफरेंस क्राइटेरिया अछि ओटीटी ओएसएसटीटी सीटीटी नॉर्म रेफरेंस होची परसेंटाइल सिस्टम जे अधिका मार्क रखिला सी जीति जीवो माने कर 200 टा पोस्ट अछि बा सीट अछि टॉप 20 रे रहिबार अछि समस्त सहित कंपटीशन अन्यर रहे तो नॉर्मल ग्रुप सहित गोटे नॉर्म ग्रुप सहित कंपेयर करा जाय स्टूडेंट रो नॉलेज और स्किल को और से अनुसार से पास ना फेल डिसाइड करा जाय ग्रेडिंग सिस्टम के इंट्रोड्यूस करथिला को ईयर रे लैटिन वर्ड ग्रेडर्स रो आसीची जार मीनिंग होची स्टेप इन एकेडमिक इट इज यूज्ड डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्टेन कोर्स केते प्रोग्रेस करछि ग्रेड द्वारा हमें करूचे ग्रेडिंग सिस्टम प्रथमे इंट्रोड्यूस केबे हितला सीबीएसई द्वारा हितला 2009-10 ओके grading system introduced in 2009-10 by CBSE Central Board of Secondary Education द्वारा इंट्रोड्यूस हुई चॉइस बेस्ड सीबीसीएस सिस्टम तुम जानते चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नहीं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर सीबीसीएस सिस्टम यूजीसी गाइडलाइन हिसाब रे आसिला प्रथमे 2013 रे choice based credit system ta hochi provides a learning platform where the students or knowledge seeker has the flexibility to choose their course from a list of elective core subject soft skill course या भितरु तमे बाछि पारिबो this is a student centric approach to learning or acquiring higher education बुझि पारलो इठी गोटे फ्लेक्सिबिलिटी दे देला काहा को छुआंगु जे तमे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम रे चॉइस बेस्ड कोर्स को बाछि परिबो तमे इलेक्टिव कोन रखिबा को चाहू छ तमे कोर सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल कोर्स कोन रखिबा को चाहू छ यू कैन डिसाइड फ्लेक्सिबल विथ फ्लेक्सिबिलिटी
2013 रे सीबीसीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस होइतला सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जानिचो कोन कहबी जे हां केते थरो देई कि केते कोठी देई कि आसलनी तार हिसाब नाही बट जो माने फर्स्ट टाइम दबा को जाउचो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जीव आखि रे देखिवो स्कैन हबो अंगूठी स्कैन हबो बसिवो तापर एडमिट कार्ड धर के भीतर जाके बसिवो गोटे कंप्यूटर नंबर दिया जाइथिबो तुमको से कंप्यूटर नंबर आगे बसिवो कंप्यूटर टी ऑन हबो टाइम चलीथिबो सडनली टाइम हे जिवो ओपन हे जिवो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन आगो आसीबो 10 मिनिट पूर्व इंस्ट्रक्शन पढिबो सबमिट करिवो सबमिट हबोनी केते बेले हबो जतबे टाइम हे जिवो एंटर मार दलो खोलिला क्वेश्चन चलो ये होची सीबीटी ओके एटा कोन पढिबी टाइप्स ऑफ टेस्ट हाँ आइला important diagnostic test it is performed to know where the learner is lagging behind गोटे टिके सिंपल सेंटेंस रे सरी गला आरंभ होई कि जे छुआ कोठी पछरे पड़ी जाई छि जानिबा केमती डायग्नोस्टिक टेस्ट कोले को एरिया रे डिफिकल्टी फेस करछ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हमें जानि जे एंटीसिपेट फ्यूचर आउटकम भविष्यत रे से कोन करि पारिबो सेटा हमें एंटीसिपेट करछ हां मॉक टेस्ट मॉक आसुची मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ओके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अमूल कुल जोटा करिसंते कमेंट रे सेटा को देखि दियो तार फुल फॉर्म पकाए MOOC ताल प्रोग्नोस्टिक रे हमें फ्यूचर रे कोन करबो आउटकम कोन हबो हमें प्रेडिक्ट करबा एंटीसिपेट करबा एप्टीट्यूड टेस्ट ता जानि छबे त करूचो टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेसिफिक गोटे एरिया रे बा कोर्स रे स्पेसिफिक एरिया रे तारो पोटेंशियल कोन अछि it help to know the potential of learner after the course बस स्पेसिफिक एरिया रे इंटरेस्ट केते अछि टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग रे तारो कोन पोटेंशियल अछि सेडाला टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेसिफिक एरिया रे स्पेसिफिक कोर्स रे कंप्लीशन रे तारो सेही थिरे थिबा पोटेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा जणा पड़े अचीवमेंट टेस्ट केते अचीव करिछि टू मेजर द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स आर अचीव्ड कोर्स रो ऑब्जेक्टिव हमर कोन छला आज मो ई क्लास ता नउछि मोर ऑब्जेक्टिव किछ अछि ना चुच्छा बेकार रे आसी बसी के रडुछि देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्टिव तमे आज आसी छ एठी बसी छ 200 रु अधिक छुआ सुनु छ तोर किछ ऑब्जेक्टिव अछि ना सो यात्रा चलछि आसी के बसी छ नै देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेही ऑब्जेक्टिव ता अचीव हेला ना नै हम केमति जानिबा अचीवमेंट टेस्ट द्वारा से लक्ष्यटा जोटा थिला आज असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कुछ बुझिबा जानिबा वैरायटीज ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ए सब को स्टडी करबा सिलेबस रो गोटे पार्ट को कंप्लीट करबा एग्जाम पे एति की परसेंट हमें रेडी हि जवा या द्वारा एई जो ऑब्जेक्टिव अछि से ऑब्जेक्टिव पूरा हेला ना नै हमें अचीवमेंट टेस्ट रो जानिबा प्रोफिशिएंसी टेस्ट these tests aim to assess the general ability of person at a given time रे गोटे लोकर जनरल एबिलिटी कोन अछि ये होछि प्रोफिशिएंट केते एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट मास्टरी केते अछि यस थैंक यू सही हां मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मॉक तापर असला गुड टेस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेबस रे पूरा बड़ बड़ अक्षर अछि रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड यूजेबिलिटी दिस आर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जते बेला आसीबो कहबो व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट लिख दिबो रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी सब्जेक्टिविटी आंसर कोन हो एबे जणा पड़िबो जे केते मन ध्यान दे कि मते सुनु छ मु कहली which is not a characteristic of good test reliability validity usability subjectivity थिवो so answer will be subjectivity गोटे कैरेक्टर नुह कैरेक्टर कोटा ऑब्जेक्टिविटी कैरेक्टर एग्जैक्टली ए क्वेश्चन बहुत थर आसुची आउ गोटे आसुची रिलायबिलिटी रो अल्टरनेट नेम टा होची कंसिस्टेंसी माने बारंबार अलगा अलगा जगह रे सही टेस्ट रो प्रयोग कले समान रिजल्ट पाइबा बा एका प्रकार रो रिजल्ट पाइले से टेस्ट टाको गोटे रिलायबल टेस्ट बोली कहआ जिवो जो जगह रे भी तमे ताको नै कि प्रयोग कर गोटे टाइप रो रिजल्ट आउटकम आसीबो
consistency in scoring after retest. Validity होची what it intend to measure, what it want to measure, what it is made to measure. यार प्रस्तुति कहीं करा जाइए ये टेस्ट रो टेस्ट तैयारी करा जाइए एही जिंस माप करबा पई जदि सेही जिंस जो जिंस माप करबा पई ताकू प्रस्तुत करा जाइए ताहा से ठीक भाबरे मेजर करि देला ताहाले टेस्ट को हमें वैलिड टेस्ट कहबा. Measure what it intend to measure. Exactly एटा आसीबो. The characteristic of a good test which measure the through which the test measure what it intend to measure is called option reliability, validity or subjectivity. Objectivity थियो तो सेठी validity को चूज करिवार अछि. Supposed to measure or intend to measure. Exactly दुईटा वर्ड थाए. What it supposed to measure, what it intend to measure. Validity. Objectivity होची never get verification of scoring by several teachers. Objectivity होची जदि मु स्कोरिंग दउची जति कि मनकर 10 रु 7 देली ताले सुभस्मिता भी 7 दउचंती, सत्य भी 7 दउचंती, प्रिया भी 7 दउचंती, बुझेला दीप्सिता भी 7 दउचंती. ए जो 7 ही समस्त देले ये होची ऑब्जेक्टिविटी. स्कोरिंग बाय सेवरल टीचर्स कले मध्य सेटा फिक्स्ड रहिबो. यूजेबिलिटी यूजफुल हेतिबो स्टूडेंट ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट बाय यूजफुल टू यूजेबिलिटी. We have already discussed these things, guys. So tell me, assessment for learning होची formative, of learning होची summative, as learning होची diagnostic self assessment हे पारे peer assessment हे पारे. निजे भी हमें diagnose करि परिबा निजो को and हम बंधु माने संग माने साथी माने भी हमको करि परिबे. peer means friends. So assessment for learning formative during teaching learning process हुए जहां हमको feedback दिए both teacher and students. Assessment of learning at the end of teaching learning process और completion रे हुए ये marks दिए grades दिए. ओके अब assessment as learning एठी diagnostic हमें कहूचे self assessment निजे निजे diagnose करि परिबा friends माने भी करि परिबे. देखिबा in detail. स्कूल बेस्ड असेसमेंट कोन एसबीए बोली ताकू कहा जाए शॉर्ट रे एसबीए. कौन मनोज नाई तमे आउ काकू देखिथिबो. It is embedded in teaching and learning process in school itself. Okay, teaching and learning process in school itself. School रे जहाँ teaching learning हुए सही तो school based assessment conducted by students own teacher. निजो मास्टर करंती हम निजो मास्टर हम दुख सुखर साथी जी हम दुख जी बुझंती सेही मास्टर जदि हमको टेस्ट कले से भी जानि छथि जे सिलेबस एही पर्यंत सरीबा कथा किंतु मु त सारिनी पचारि जदि छुआ तो करि परिबेनी तेनु जति कि पढैछि सेति कि क्वेश्चन आसीबो बोली कोंती ये होचंती सेही स्कूल बेस्ड असेसमेंट. Here in SBA all aspect of evaluation are decided by the school such as teachers, learners and other participant of the school. एटा क्वेश्चन आसे रे देखि दियो ठीक है ध्यान दियो. स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ऑफ टीचर मेड टेस्ट. स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे कंटेंट इज appropriate to assess all students. स्टैंडर्डाइज टा मास रे करा जाए लार्ज ग्रुप रे करा जाए लार्ज ग्रुप हला लार्ज ग्रुप रे हुए स्टैंडर्डाइज टेस्ट. टीचर मेड टेस्ट टा कोन स्मॉल ग्रुप रे हुए स्मॉल ग्रुप रे जानी था एटा हला appropriate to assess all students. स्पेसिफिक कंटेंट addressed in class जति कि पढै छथि टीचर सेति कि करिवे ना हम सुख दुखर साथी कथा कहूची एसबीए कथा स्कूल बेस्ड असेसमेंट कथा. Items have been researched to reliably predict an outcome. एटा रिसर्च करके करा जाउची एटा टेस्ट रो सब नॉर्म्स को सैटिस्फाई करबा दरकार. रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी. Items have not been researched.
teacher decide how to administer and score the test, can be modified to form individual students or classes. Score comparisons can only be made to the group who took the same test in the same condition. Local class specific comparison हुए and एटा teacher made test school रो environment भितर हुए. Standardized टा तुम्हें 10th श्रेणी रो परीक्षा हला, तमरो LTR रो परीक्षा हला, तमरो B.Ed रो entrance हला, हाँ तमरो कौनसी भी competitive exam रो CBT हला, ये standardized. There are standardized administration and scoring rules that cannot be modified. Scores can be compared to norm groups. एटी comparison करा जाए. तो standardized test टा हमरो कौन सब rules regulations को माने की तैयारी करा जाए. Right? Clear? Okay. We have important 50 plus MCQs. So more tools and techniques of evaluation को जीवा पूर्वरु let me एटे तो बहुत important part हमें ଏବେ discuss करिवा. Let me do some MCQs now. तापर पुणी मु बैक करके आसीबी किछि MCQs करिवा and ता पूर्वरु मु समस्त को कहबा को चाहूची जो माने exploring goals आप रे join करिनो join करि परिबो. For more details you can WhatsApp me. जो नंबर देखुचो एथरे WhatsApp करि परिबो for more details. Okay. So let us begin this important session again with some important MCQs. School-based assessment is primarily based on the principle that yes, बहुत बढ़िया. Assessment should be very economical रे कथा नहीं, more efficient than external bodies. आमे किछ compare करने high grades नहीं. इटा learner रो capabilities better भलो से जानती teacher than external exam. Okay. A teacher, after preparing a question paper, checks whether the question tests specific testing objectives. He is concerned primarily about the question papers. Answer होची validity कहीं ना objective what it intend to measure से objective टा ठीक रे करूची ना नहीं what it supposed to measure सेटा मापुची ना नहीं तो सेटा को टेस्ट करिवाटा होची validity. Objective question कोटा क्लियर ट्रू और फॉल्स एटा होची ऑब्जेक्टिव कहीं ना शॉर्ट आंसर टाइप रे तो 2-3 लाइन लिखिया को पड़ियो. ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन रे तो तमे हां सरी वाला कथा गाइरो आत्म कहानी लिखुचो बसिकी राइट. Assessment for learning takes into account the following except केउटी को छाड़ी की assessment for learning बाकी सब जिंस को देखे except कहिछ नेगेटिव जिंस को छाड़ी दियो. एटी मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स कहिछ तो मिस्टेक्स को देखेनी, लर्निंग स्टाइल को देखे, स्ट्रेंथ को देखे, नीड को पूरा करबा को देखे. किंतु नेगेटिव जिंसटा मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट एटा हबनी आंसर. ओके हबो आंसर काहे कि एक्सेप्ट कहितला. नंबर 5.
Upscaling of performance in the scholastic area on the basis of performance in co-scholastic area can be justified as it caters to individual differences, friends. It follows the policy of compensatory discrimination for the marginalized. अच्छा it discrimination कोठी होची कौनसी discrimination नहीं एटी individual difference को cater करा जाउची upscaling of performance in scholastic area on the basis of performance in co-scholastic area तो आमे co-scholastic रे जदि भी भलो पढुचे ताहले भी ताको upscaling करूचे very good बोली कहूचे एंड ताको सतके इंपोर्टेंस दिया जाउची समस्त scholastic रे ही परफॉर्म करिवे भलो किछि माने नहीं co-scholastic को भी इक्वली इंपोर्टेंस दवा दरकार कहूचे बहुत बढ़िया participation. Thank you all. Continuous and comprehensive evaluation emphasizes का ऊपर फोकस करूची हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव्ड अपन केमिति हमें निजे पढ़ी के क्वेश्चन करियो हो कर कि मना कर ऑब्जर्व रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव्ड अपन क्वेश्चन करिवो किंतु ता पूर्व जो माने सब्सक्राइब करिनो चैनल को भूली जीव सब्सक्राइब करने को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो सो दैट यू विल गेट such sessions in future as well and you will stay tuned to exploring goals. You will stay tuned to Gadhyadala and you will keep exploring and keep achieving new heights in your life. So we will together fine tune our learning. Next question number 7. RHT 1, 2, 3, 4 एमिति sorry for the mistake. So the right answer is helps all students learn more through diagnosis. Very good. Number 8. Record all the activities of students for better interpretation of their progress. Record all activities कले तांकर original जो weight अनु कि सेटा बाधा पाइबो. एटी अब ensure the holistic development of all the students. All students कर holistic development ensure करिवो school based assessment. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. Organizing question answer session, taking feedback from student on a topic, conducting quiz ए सब आमे लर्निंग आउटकम को देखुचे किंतु मॉडलिंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट ए सब किए करिवे टीचर मेड असेसमेंट किंतु सेल्फ असेसमेंट ता नॉट रिलेटेड टू अदर 3 सो 4 और डी इज द राइट आंसर. सेल्फ असेसमेंट कथा ये कहूछ ए सब रे टेकिंग फीडबैक हो ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर हो कंडक्टिंग क्विज हो या द्वारा टीचर असेस करछन बट निजे असेस करबा होचे सेल्फ असेसमेंट. ये डेवलपमेंटल हो राइट आंसर कहीं की देखो कहला लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग एंड द लर्नर हु लर्न द सेम लैंग्वेज एज सेकंड लैंग्वेज तार मदर टंग सेटा नो
तो मदर टंग टा कौन एक्विजिशन हुए लर्निंग हुए एक्विजिशन माने ऑटोमेटिक ही जाए किंतु सेकंड लैंग्वेज हला को डेवलपमेंट प्रोसेस रे सेटा धीरे धीरे आसीबो सो मदर टंग टा डेवलपमेंटल प्रोसेस and the learner who learn the same language as a second language the error is common between कौन error टा common हबो डेवलपमेंटल error माने आमे केमिति ताको यूज करछे धीरे धीरे प्रोसेस करछे से सब जिंस आसुछ ओके Learning disability in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following test? कौनसी भी सब्जेक्ट रो लर्निंग डिजेबिलिटी टाकू आमे कौनसी भी सब्जेक्ट मैथ हो कि जहा हो को एरिया रो लर्निंग डिफिकल्टी अछि ताकू डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा हमें फाइंड आउट करछे तो डायग्नोस्टिक कर दबा सर खत्म कहानी एटा को टाइप रो क्वेश्चन हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स बहुत बढ़िया फ्रेंड्स डूइंग ग्रेट रोजालिन विश्वजीता मनु दीक्षिता प्रियंका कल्पना मनसून सोनली सविता सुमित्रा नीलांबर कोगी स्वाति मनोज गायत्री बहुत बढ़िया आलोक थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आकाश एंड प्रशांत प्रकाश रोजा 12th जना पड़ जाउछ ना एनालिटिक एटी एनालिसिस करछे जे हमें ग्रेड्स और मार्क्स भीतर कोन फरक अछि एनालिटिकल एटा एनालिटिक करछे हमें ओके बढ़िया सुमित्रा असमनी जीएससीए सागरी गंगा मनोज जेहरू बहुत बढ़िया प्रिया योसामयी अमित so it reads the work of the class then plan and adjust the next तो एटी ताकू फीडबैक मिलिला ना सेति पय तो सी एते जिंस करि परचंती तो असेसमेंट फॉर लर्निंग काई एटी का कोन मिलिछि टीचर को फीडबैक मिलिछि तेनु से अनुसार से तांकर प्लान एडजस्ट नेक्स्ट सेशन करचंती जेहेतु से कलेक्ट करचंती रीड करचंती वर्क ऑफ द क्लास तो थोड़ी तांको कोन मिलि जाइछि फीडबैक मिलि जाइछि not a suitable formative assessment task ranking of student summative पर at the end or completion of a course CC continuous and comprehensive evaluation कोच ପାଇଁ ଦରକାର correcting less frequent errors more than more frequent errors अच्छा understanding how learning can be observed recorded and improved upon एटा CC ताले ठीक अच्छो समझते very good the assessment of students can be used by teachers in teaching to develop insight into बहुत बढ़िया changing the teaching approach according to learners need अनुसार approach टाको चेंज करियो 17
असेसमेंट मोटिवेशन आने रे असेसमेंट हमको मोटिवेशन दिए बहुत बढ़िया ऑप्शन डी ठीक असेसमेंट एक्सटर्नल एजेंसी ही करिवो टीचर करि परिबे नाही कहूछ yes assessment is a inbuilt process in teaching learning it is an integral part of teaching learning process okay ଏଠି ତିନିଟା ହିଁ ଅପସନ୍ ଅଛି କି ଭଲ ହେଲା ଆଉ expecting student to produce knowledge in the same way ଯଦି ସେମ୍ ୱେରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁରେଇ ଦେଲ ଯାହା ସେମିତି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ it's problematic এটা অসুবিধা କରିବ because individual interpret experience and do not reproduce knowledge as it is received interpret ବି କରନ୍ତି experience ନିଜର experience ସହିତ ଓକେ ଦେଖ assessment is a way to improve learning simple ଜିନିଷ ପୁରା ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ତରତରରେ ଟାଇପିଂ ଏରର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ it serves as a feedback for students as well as teachers assessment ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦିଏ ନା ଆଉ କଣ ଖବର କହ ତାପରେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା କଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜୀବନ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢୁଛି ଦେଖିବ ଯୋଉଦିନ ବି ନୂଆ କିଛି କିଛି ପଢ ସବୁଦିନ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜଟାକୁ ଏବେ ରେଗୁଲାର କରିଦେଇଛି ପୁରା ସିରିଜ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ପୁରା ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଚାଲିଛି ଆପ୍ଲିକେସନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ରିଜନିଂର ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାର ଅଛି ସୋ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଉ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ମୁଁ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅଲସୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି କଭର କରିଦିଅ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ସିରିୟସଲି ଦେଖିବ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଟାସ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏତିକିକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହଉ ଓଇଏସ୍ ହଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ ହଉ ଯୋଉ କୋର୍ସରେ ବି ତମେ ଅଛ you should have the syllabus one copy on the wall one copy on your desk बस देखि चलो कौन पढ़ा होची जबरदस्त प्रिपरेशन चलीची and आगो को मध्य चलिबो so those who are not in exploring goals application must join immediately as soon as possible because it टाइम पळैले आ तमरो जेतेबेले नोटिफिकेशन आसीबो ना प्रिलिम एग्जामिनेशन एई डेट रे हबो सेतेबेले तमे कहबो सर टाइम पळैला एबे कोन केमति पढिबी एबे कहूचो सर केमति स्टार्ट करिवि जानि पारुनी notification has already been published डेट ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲତ ଥର ବାଲା ହାଲତ ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ସୋ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ୟୋର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜ ଇଟ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ 22
बहुत सहज असेसमेंट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं कि आउ किछि भाबबार नहीं एठी गुड दीप्ति थैंक यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन दीटा जाक जानिबा दरकार से कोठी तांकर स्ट्रेंथ अछि कोटा तांकर वीकनेस एटा जानिले हमें असेसमेंट ता ठीक हैला बोली जानिबा हमें असेस करछे माने कोन छुआर लर्निंग डिफिकल्टी को भी जानुछे और तार स्ट्रेंथ को भी जानुछे केवल डिफिकल्टी जानिबा असेसमेंट सक्सेसफुल हे गला कोइ परिबानी हम तार स्ट्रेंथ को भी जानिबा दरकार हाँ एगुड़ा सब हो पार किसी असुविधा नहीं प्री टेस्ट भी हो पार पोस्ट टेस्ट भी हो पार टेस्ट पर आम जब आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट करें टेस्ट पूर्व आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करें ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित भल भाव में जड़ित आ गोटे ऑप्शन अच्छी बट से आंसर नुह तो देखो एक्जाक्टली टीचर मेड टेस्ट निहाती दरकार कहीं से माने डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स अब तांकर डिसएडवांटेज माने से को कैटेगरी रे तांकर डिफिकल्टीज अछि सेटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट कला वाला जानी नहीं सो स्टैंडर्डाइज टेस्ट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्पेशल नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप सेति पई टीचर मेड टेस्ट तांको पई बेसी प्रिफरेबल फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स और डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स फर्दरिंग लर्निंग आगो को केमती लर्निंग टा बेटर करिवा इन फ्यूचर हाउ लर्निंग विल बी बेटर हाउ अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर हाउ लर्निंग आउटकम विल बी बेटर असेसमेंट या ऊपर फोकस कर एटा देखो एटा एटा मो पई एबे एप्लीकेबल एटा मु जेतु एबे तमरो टेस्ट करूची एंड एज ए टीचर मु एबे रोल करूची जदियो मु तम मानकर सब फ्रेंड बट स्टिल एबे रोल तो करूची ना ना कोन आइडियल वेटिंग टाइम टा केते हवा कथा माने मु एबे गोटे क्वेश्चन टा देली केते समय तुमको दबा कथा वेट करबा कथा कि तमे केते समय भीतर रेस्पोंड करिवो सेटा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन ऊपर डिपेंड कर जदि बहुत डिफिकल्ट अछि ताले अधिका समय दबा जदि कम डिफिकल्ट अछि ताले कम समय दबा ए दुईटा ऑप्शन सहित आगे देखि दियो चेक कर दियो आ दुईटा तळे अछि all of the following promote assessment as learning except कोटा assessment as learning promote करने telling students to take internal feedback generating a safe environment for students to take chances कहिछि promote assessment as learning except केउंटी नो टेस्टिंग स्टूडेंट्स as frequently as possible अरे एते फ्रिक्वेंटली करबानी परा वीकली टेस्ट तो हमें करबानी मंथली करबा राइट वीकली तो हमें करने एते फ्रिक्वेंटली ले तांको ऊपर बेसी प्रेशर होबो आ पूरा एनुअली गोटे थर कले भी बहुत
हाँ डिले हो तो फ्रिक्वेंटली बेसी फ्रिक्वेंट भी नुह आज फ्रिक्वेंटली आज पॉसिबल कहले कौन घंटा को थरे खाली टेस्ट करिवो ना कौन if students repeatedly make errors during a lesson a teacher should principal about them এটা সহজ কথা নহ টিচর হিসাবে তোমার রোল কোন আগে কুহ মেক এরিং স্টুডেন্টস স্টান্ড আউটসাইড দ ক্লাস তো কেবে বি হবনি এটা পনিশমেন্ট হেগলা পনিশমেন্ট ফ্রি বর্তমান সবু জিনিস and leave the lesson for that time being and come back ये भी तो नुह हारिकी पळेइबो युद्ध क्षेत्र छाड़िकी तो जोटा क्लियर अच्छी सेटा मेक आमर इंस्ट्रक्शनल चेंज करबा आमर मेथड ऑफ टीचिंग रे चेंज करबा टास्क रे चेंज टाइम टेबल और सेटिंग अरेंजमेंट रो चेंज मध्ये बेले बेले बहुत इफेक्टिव हुए सो ए सब जिंस आमे चेष्टा करबा जा द्वारा कि रिपीटेड एरर्स को अवॉइड करा जाय पारे एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन यार आंसर कोन करबो ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी ए काइंड ऑफ बोली भाबो हाँ ए काइंड ऑफ एटा हला फॉर्मेटिव असेसमेंट एटा होची फॉर्मेटिव काहे कि ये फीडबैक दिए कहा को कुक जा द्वारा जो फीडबैक को नेकी से चेंज आने जदि किछि खराब थिबो भलो करिवो जदि भलो अछि आहुरी बढ़िया करबा पई चेष्टा करिवो ना खराब करबा पई चेष्टा करिवो ठीक अछि बुझी पारलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व मु टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को जाउछि ओके और हमें सेकंड पार्ट रे करबा तम इच्छा सेकंड पार्ट रे जदि करबा वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 31 टू 52 पर्यंत सो वी शुड गेट ए ब्रेक ना मु जानि छी तुम मन को ब्रेक भी दरकार वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन and from question number 31 okay so that's it जेतु हमर जो कंसंट्रेट करिवार गोटे भी सीमा अछि तो you have already concentrated for more than 1 hour so let us make it in the part 2 okay thank you everyone hopefully तमे समस्ते ए pdf को पाई जाई थिबो कहीं कि I have provided this pdf in the application already जो मैंने आप रे join करना you can join as soon as possible to get all these things all the study materials and everything in detail and for more details you can whatsapp me जो नंबर देखु छ नंबर रे whatsapp करि परिबो to get the classes live and जो live miss करछ recorded हिसाब रे जे कोनोसी टाइम रे तमर ऑफ सुइटेबिलिटी हिसाब रे देखि परिबो सेमती सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल अछि and study materials सब pdfs सब मास्टरपीसेस सब ई बुक्स अवेलेबल अछि कोनोसी बही कोनोसी MCQ practice आउ एक्स्ट्रा दरकार नहीं एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एप्लीकेशन जते जल्दी पारुछ जॉइन करि परिबो एंड यू कैन जॉइन अस इन एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लीकेशन डायरेक्टली फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर रु डायरेक्टली जाई कि एक्सप्लोरिंग गोल्स सर्च करि कि माने ताको डाउनलोड करि परिबो एंड माय डियर फ्रेंड्स जो माने भी वीडियो को लाइक करना वर्तमान पर्यंत इट इज रिक्वेस्ट दैट मु भाबुछि जे तुम को पसंद हेइथिबो जदि पसंद हेइछि टिके लाइक करबो अदरवाइज इट इज ओके मु मैनेज कर देबी किंतु पसंद हेइछि तो लाइक कर दो मते टिके खुशी लागिवो and do share also eta टिके फ्रेंड्स मान सहित शेयर भी कर दो संस्थान से so thank you all already 8 am class for it okay very good smita very good yes so thank you everyone thank you very much for staying connected in all our social media handles and जो माने टेलीग्राम रे भी join कर जाओ एप्लीकेशन रो लिंक भी देछि देखो you can join in application directly through by
paying in the application through your registration and login. You can just pay $399 to enjoy learning, uninterrupted learning, and you can easily succeed in your life. So thank you for being a part of Exploring Goals family, easy family. Take care, stay connected. पुणी देखा यारो नेक्स्ट पार्ट रे। जय जगन्नाथ।